Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़ी ताजा खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। और अब हेडलाइंस के साथ हैं अर्जुन चौधरी। Core sector industrial output grows 6.8% in the month of March. At the stock market, Sensex slumps 984 points, Nifty plunges 264 points, rupee drops 2 paise against the US dollar. And Finance Ministry to provide an additional amount of up to 15,000 crore rupees to states as interest-free 50-year loan for spending on capital projects. केंद्रीय 8 क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन मार्च के दौरान 6.8% की वृद्धि में। शेयर बाजारों में सेंसेक्स 984 अंक लुढ़का, निफ्टी में 264 अंकों की भारी गिरावट आई, रुपए में डॉलर के मुकाबले 2 पैसे की कमजोरी हुई दर्ज। और वित्त मंत्रालय ने पूंजीगत परियोजनाओं पर खर्च के लिए ब्याज रहित 50 वर्ष के ऋण के रूप में 15,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि राज्यों को देने का फैसला लिया। In our top story, led by a low base effect, the combined output of the 8 core sector industries grew at 6.8% in the month of March over the same month a year ago. In the previous month of February, contracting 3.8%. Despite the return to the growth, the cumulative core sector output in the last financial year contracted 7%. This was due to core sector output shrank in as many as 8 months of the financial year. Annually, the core sector output had witnessed a marginal 0.4% rise in the financial year 2019-20. The data released by the Commerce and Industry Ministry today showed production declined in 4 out of the 8 core sector industries, while cement production rose the highest, jumping 32.5%. The output of the coal sector witnessed the steepest fall, contracting 21.9%. Puneet, once again a warm welcome to your Market Mantra. Thank you, Arjun. Puneet, along with the rise in cement production, which went up by 32.5% as compared to a year ago, the finished steel also rose by 23%. So it appears that from the data of 6.8% growth for the month of March, apart from the low base effect, there has been a lot of focus on the building and construction industry. Is that how you would read the data, or is there more to it? No, Arjun, this is exactly what the data is telling us, and we had empirical evidence of this so far, because we know that the steel companies are doing extremely well, of course are at record highs, and cement sector, which was really facing a lot of tough times earlier, that is also grown. The other sector which has done very well over the past few months in spite of challenges is the power sector, because power sector also saw an increase in consumption, and clearly these are the basic building blocks of the economy. So while we know that there are a lot of challenges ahead for the economy in terms of the spread of pandemic and in terms of controlling the disease, the truth is that these figures, they reinforce our belief that going forward we should see a good, healthy expansion in GDP in the current financial year. So there are various estimates of growth, but I think GDP should grow nearly in double digits in the current year, and core sector, which comprises basically of 8 industries which are the building blocks to this to this data, and also the core sector has very large weightage in IIP. So my own assumption is when we get the industrial production figures for the first quarter, they will also show an impressive jump in numbers. So पुनीत, आपको लगता है कि ये जो आप कह रहे हैं कि जो ग्रोथ होगी, जीडीपी की ग्रोथ आपको पूरी उम्मीद है, इसमें
पब्लिक एक्सपेंडिचर का भी बहुत अहम रोल बना रहेगा। इनफैक्ट आज हमारे पास एक स्टोरी है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए 50 इयर्स के इंटरेस्ट फ्री लोन्स एक्स्ट्रा 15,000 करोड़ रुपए के लोन्स देने की बात कही है स्टेट्स को। तो आपको लगता है कि स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? बिल्कुल। देखिए, जब भी इकोनॉमी में एक गिरावट होती है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस, तो उसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है कंजम्पशन या इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश करने का। तो हमने देखा है पिछले दिनों, यदि आप देखें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें तो रोड कंस्ट्रक्शन, रेलवेज, जो इस तरह के पब्लिक एक्सपेंडिचर हैं या एक्सपेंशन बाय ऑयल कंपनीज, यहाँ पर उन्होंने, सरकार ने अपना खर्चा जो है बढ़ाया है। तो जब प्राइवेट एक्सपेंडिचर या प्राइवेट कंजम्पशन जब कम होती है तो सरकार के पास ये एक, आप कह सकते हैं, ड्यूटी है कि वो इकोनॉमी को चालू रखने के लिए वो उसके अंदर एक्सपेंडिशन करे। अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट, हमारा पहले एस्टिमेट ये थे कि गवर्नमेंट के पास, क्योंकि टैक्स कलेक्शन बहुत कम होगी तो उनके पास कैपेबिलिटी टू स्पेंड विल बी लेस। लेकिन जब हमने फाइनल फिगर्स देखी FY 2021 की, यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर की, तो उसमें टैक्स कलेक्शंस थी वो उम्मीद से बहुत बेहतर रही। इनफैक्ट एस्टिमेट से उनसे भी बेहतर हमने देखा कि टैक्स कलेक्शन रही। तो सरकार के पास एक अच्छा, मैं कहूंगा एक हेडरूम है कि वो पब्लिक एक्सपेंडिचर को थोड़ा इस वक्त बढ़ाकर रखे। जब इकोनॉमी अपने नॉर्मल एक्सपेंशन मोड पर आएगी और प्राइवेट एक्सपेंडिचर या प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ेगी, तब मुझे लगता है कि सरकार का रोल कुछ हद तक कम होगा। लेकिन इस मौके पर government has big role to play in pushing expenditure and economic growth. Puneet, you spoke about the weightage of the 8 core industrial sectors, which includes coal, crude oil, natural gas, refinery products, steel, cement, fertilizer, and electricity. The weightage in the index for industrial production, which is 40%. So what is the estimate for the factory output as far as the nation is concerned? Because the previous question was based on public expenditure on infrastructure projects. What about the combined public and private investment in infrastructure and in other industries? So, Arjun, the industrial production, of course, then beyond these 8 sectors, then we have other sectors, which are downstream sectors, so to say. So you can talk about automobiles, you can talk about telecom gear, we can talk about various other sectors of the economy. So my own estimate is that pushed by the core sector growth, we will see a reasonable growth in industrial production. See, usually during last year we have seen a lot of contraction in IIP, and only on certain occasions we have seen the industrial production go up. But my own estimate is that we will see a positive growth in industrial production. I don't have estimates of how much that growth would be, but I'm quite sure that driven by consumption, private consumption, we saw a lot of private consumption in last quarter. My own estimate is industrial production numbers will be quite positive when we get them later this month. पुनीत, अगर हम एक और सेक्टर की बात करें, मेजर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एग्रीकल्चर, वहां से बड़े अच्छी खबरें आ रही हैं, रिकॉर्ड प्रोडक्शन की, मॉनसून के अच्छे फोरकास्ट आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि एग्रीकल्चर एक स्ट्रांग पिलर इस वर्ष भी बना रहेगा इकोनॉमी के लिए? बिल्कुल सोनू, देखिए पिछले साल भी एग्रीकल्चर सेक्टर या रूरल सेक्टर आप कहें तो वहां पर ग्रोथ भी थी, इकोनॉमिक ग्रोथ, और करीब 4% एग्रीकल्चर में ग्रोथ रही, विच इज क्वाइट हाई फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। और मुझे लगता है कि जो करंट ईयर है उसमें भी हम देखेंगे कि जो ग्रोथ रहेगी वो बरकरार रहेगी, मेंटेन करेंगे। और रूरल कंजम्पशन जो है वो भारत की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा मजबूत हिस्सा बनकर के उभरी है पिछले 1 साल में, एंड दैट कंटिन्यूज टू बी रोबस्ट। देखिए, इतना बड़ा लॉकडाउन लास्ट ईयर रहा, उसके बाद इस साल भी काफी चैलेंजेस हैं इकोनॉमी को। हम देख रहे हैं कि अलग अलग स्टेट्स में लोकलाइज लॉकडाउन काफी हैं। उसके बावजूद हम कोई जो कमेंट्री हम आ रही है, FMCG कंपनी से आ रही है या दूसरी कंपनी से आ रही है, वो कोई बहुत बड़ा कोलैप्स इन कंजम्पशन हम नहीं देख रहे। आई थिंक दैट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। तो समहाउ वी आर एबल टू मेंटेन द पेस ऑफ इकोनॉमी। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा ग्रोथ आएगी अभी फिलहाल, लेकिन डेफिनेटली इकोनॉमी जो है वो उसमें एक रुकावट बहुत बड़ी नहीं है। और जब भी ये सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव होगी कोविड-19 की, हम देखेंगे कि वहां से रिकवरी काफी स्ट्रांग होगी। और मुझे लगता है एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर विल कंटिन्यू टू बी क्वाइट रोबस्ट in that situation. Puneet, do you think that our dependence on fuels like coal to fire thermal power plants or
synthetic fertilizers for agriculture, or for that matter, petroleum products for transportation and logistics, that dependence has come down. We're looking at alternatives. Is that the real reason why we are seeing a contraction in their production? Arjun, see, the move towards self-dependence in terms of fertilizer you talked about. So India has increased its capacity of fertilizers, and now we are not importing them anymore in a big way. Similarly, refinery products we still import. I mean, we're still dependent on them, but directionally India is trying to develop alternatives. I think the real impact of all these things will take place in 4 to 5 years. We are trying to move to electric vehicles, but I think that transition is going to take 5 years to maybe 10 years. So the real impact on this economy will be seen in 5 to 10 years. But my own sense is that we have to start walking someday. So the good thing is that India has started walking in that direction, and I think we will reduce import dependence on these critical raw materials, and that would really give India a lot of boost vis-a-vis forex reserves, vis-a-vis economic growth. Yes, you are right. I think, but not immediately. I think it will take some time. आइए अब रुक करते हैं शेयर बाजारों का। शेयर बाजारों में बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 2% लुढ़ककर 984 अंकों के नुकसान से 48,782 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1.8% की भारी गिरावट से 264 अंक टूटकर 14,631 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.7% के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.1% की गिरावट दर्ज हुई। At the stock markets, the Sensex at the Bombay Stock Exchange slumped 984 points or 2% to end at 48,782. Nifty at the National Stock Exchange plunged 264 points or 1.8% to 14,631. In the broader market, the BSE Mid-Cap Index fell 0.7% and the Small Cap Index shed 0.1%. Among sectoral indices, the Finance Index was a leading loser, slumping 2.7%. BankX plunged 2.6%. Auto Index dropped 1.4%. FMCG Index and the Industrial Index declined 1% each. Capital Goods Index slipped 0.9%. IT and Tech Indices slid 0.8% each. Consumer Durables Index and the Telecom Index fell 0.7% each. Realty and the Energy Indices lost 0.6% each. Among advancing indices, Oil and Gas Index climbed 1.3% and the Healthcare Index rose 0.8%. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 2 पैसे कमजोर हुआ और $1 की कीमत 74 रुपए 6 पैसे दर्ज हुई। पुनीत, आज हमने बहुत भारी गिरावट देखी है बाजार में, लगभग 1,000 अंकों की। 3 दिन की हमने पिछले जो हफ्ता था, पूरे हफ्ते में तेजी थी। कैसे देखते हैं आप आज की गिरावट को, क्या कारण है? सोनू, देखिए, आज की जो बाजार की गिरावट थी वो काफी मिक्स्ड, मैं कहूंगा, उसका इम्पैक्ट है, क्योंकि हमने आज हेडलाइन इंडिसेस में काफी भारी गिरावट देखी। तो जैसा अभी आपने स्टोरी में पढ़ा कि जो निफ्टी या सेंसेक्स है वो करीब 2% उसमें गिरावट आई, लेकिन मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में 0.1% एंड 0.7% डिक्लाइन था। यानी जो विस्तारित बाजार था, ब्रॉडर मार्केट थी, वहां पर हमने उतना भारी गिरावट या उतनी भारी बिकवाली नहीं देखी। जो हेडलाइन स्टॉक्स हैं या बड़े बड़े शेयर्स हैं, उसके अंदर आज बहुत बिकवाली थी। खासतौर से मैं कहूं तो HDFC और HDFC बैंक, जिनका इंडेक्स में काफी भारी वेटेज है, करीब 15 से 20% वेटेज है, वहां पर हमने 4 to 5% फॉल देखा। इसी तरह ICICI बैंक या एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन जो हैवी वेटेड स्टॉक्स हैं, यहाँ ज्यादा बिकवाली। तो क्या ये प्रॉफिट बुकिंग थी? देखिए, ये प्रॉफिट बुकिंग, डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग थी बाय सर्टेन इंस्टीट्यूशंस जो काफी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, और उन्होंने, मुझे लगता है कि यहाँ पर उन्होंने कुछ पैसा रोटेट किया है वैल्यू स्टॉक्स में। और जो बढ़ने वाले शेयर्स थे, यदि आप देखें तो उसमें पब्लिक सेक्टर कंपनीज के शेयर्स, ONGC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इसमें हमने काफी अच्छी बढ़त देखी है। आज 3 से 4% वहां पर बढ़त थी। तो डेफिनेटली, और ये स्टॉक्स जो पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स हैं, इनको वैल्यू स्टॉक्स कहते हैं, क्योंकि इनकी कीमतें कम हैं, ये अच्छे डिविडेंड देती हैं, इनकी कमाई भी काफी स्टेबल है। तो मुझे लगता है आज जो कुछ हद तक इंस्टीट्यूशंस ने लार्ज स्टॉक से पैसा निकालकर वैल्यू स्टॉक्स में उसको इन्वेस्ट किया, और यही हमने आज खास मार्केट में
डायरेक्शन देखी, और मुझे लगता है साथ ही में जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स थे उनका भी जो आउट परफॉर्मेंस था वो आज नोटेबल है, और आने वाले समय में थोड़ी जैसे चिंताएं कम होती हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हम अच्छी बढ़त देखेंगे. Puneet, you mentioned about public sector corporations in the oil and gas space. ONGC went up by 4% in valuation today. What is the impact of the fourth quarter reported earnings of Reliance Industries, not just today but next week when the market opens on Monday? So, Arjun, Reliance, of course, again is a bellwether in this market, not only in terms of economy, because it has sales of almost 1.5 lakh crores every quarter. So it really impacts the economy in a very big way. And I think good numbers from Reliance, they will contribute to increased confidence in the market. Because there's a large number of investors in the company, and they also have very large weightage in the economy. So my own sense is that if markets do not see any substantial selling from foreign investors, then we should see a positive trend on the back of Reliance numbers. And I'm sure that going forward, as we see the fourth quarter numbers come in, because we saw numbers from ICICI Bank, Axis Bank, all these numbers were pretty good, and I think they were better than expected. So my own sense is that financial performance is good by this sector. Of course, markets will take the cue from a lot of things like foreign investor selling, domestic investors, domestic situation. Those things are variable. पुनीत, आपने फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग की बात करी, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने अप्रैल के महीने में, जो आज 30 अप्रैल है, नेट सेलिंग करी 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की. लेकिन कई फैक्टर्स नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव भी हैं. लिक्विडिटी, यूएस फेड ने आश्वासन दिया है कि जारी रहेगी लिक्विडिटी का फ्लो. जैसे आपने कहा कि हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है. सो अब आने वाले महीने में या आने वाले 2-4 महीनों में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है एफपीआई से, कि उनका क्या रुख रहेगा भारतीय बाजार की तरफ? देखिए, एफपीआईज मेरा अनुमान है कि वो भारत के बाजारों में नेट इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, क्योंकि पिछले साल उन्होंने काफी बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट किया भारत में, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स काफी सेलिंग कर रहे थे, और वो जो उनका इन्वेस्टमेंट था उससे उनको काफी अच्छा प्रॉफिट आ रहा है इस साल. तो हम देख रहे हैं कि वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं. लेकिन यदि हम ग्लोबल इन्वेस्टर्स एनवायरमेंट को देखें तो एफआईआई के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है सेल करने का, और दूसरी बात यह है कि वो उस पैसे को री इन्वेस्ट करेंगे दूसरे सेक्टर्स में, दूसरे शेयर्स में. तो मेरा अपना अनुमान यह है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में अभी निवेश करते रहेंगे बिकॉज ऑफ वीक डॉलर. ऑल्सो डॉलर में भी कोई बहुत बढ़त हम नहीं देख रहे, और मुझे लगता है कि जो बेसिक एनवायरमेंट है इंडिया की, जो ओवरवेट आज किया है एक बड़े एनालिस्ट ने ग्लोबली, तो मुझे लगता है कि ग्लोबल एनवायरमेंट पॉजिटिव रहेगा. वी माइट सी प्रॉफिट बुकिंग लाइक टुडे इन सम लार्ज स्टॉक्स, लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि एफआईआईज भारत में अभी निवेश करते रहेंगे. Puneet, the FIIs and the FPIs may be net sellers in the cash market, but clearly they're taking positions in the options market, especially in public sector companies, which were the top gainers in the cash market, like ONGC, Coal India, and other public sector companies like SAIL in the steel space itself. So do you see them actually playing a very important role in how volatile the market is going to be for the month of May? Yes, Arjun. See, typically FIIs have a very large role to play in Indian markets because they are very large investors, and only recently have mutual funds become somewhat comparable in size. But yet FIIs continue to determine the broader trends in the market. FIIs have not been very big investors in public sector companies. They have mostly preferred investing in private sector companies rather than PSUs. And if they do find value in PSUs, I think it will be very welcome, because those are really downtrodden in terms of valuations, and there is a huge opportunity for foreign investors to make money in public sector companies, and that will also benefit Indian economy because the valuations of PSUs will go higher. So I think my own sense is that broadly, if we see globally, if I see what is happening in USA, in Europe, in other places, there is a certain trend for investing money in value stocks now, and away from momentum stocks. Earlier we saw US was performing on the back of FANG stocks, the IT stocks. Now we find that the rally in the US market is more broad-based. So the Russell Index, which is a 2,000 share index, has gone up in USA compared with the NASDAQ.
So clearly, I think in India also we will see that similar trend happening, that money will rotate from momentum stocks to more value-based stocks, and therefore we could see those kind of gains. एक और ट्रेंड अगर आप बताएं कि आपको आगे क्या लगता है कैसा उसका रुख रहेगा। पिछले वित्त वर्ष में नए डीमैट अकाउंट्स का जो संख्या थी वो 1.42 करोड़ के करीब थी, जो 3 गुना था उससे पिछले वित्त वर्ष का। सो डायरेक्ट रिटेल इन्वेस्टर्स ने बहुत इंटरेस्ट शो किया था बाजार में। इस वर्ष आपको क्या लगता है, क्या रुख रहेगा? सुनो, देखिए, ये एक बहुत ही मुझे लगता है रिमार्केबल डेवलपमेंट रही कि पिछले साल जब काफी चैलेंजेस थे इकोनॉमिक, तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने काफी बढ़ चढ़ करके स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने अपनी सेविंग्स को वहां चैनलाइज किया, और मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड है। और ये ट्रेंड सिर्फ भारत में नहीं था, एक्चुअली ये वर्ल्ड वाइड ये ट्रेंड हमने देखा कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने मार्केट के अंदर काफी इन्वेस्टमेंट की। और मेरा अपना अनुमान ये है कि अब ये ट्रेंड, क्योंकि जो मार्केट भी अब ट्रेंड में है और रिटेल इन्वेस्टर्स ने अच्छा प्रॉफिट कमाया है पिछले साल, तो मुझे लगता है कि वो स्टॉक मार्केट में बने रहेंगे। और आने वाले टाइम में आई जस्ट होप दे डोंट इन्वेस्ट रेकलेसली, कि कई बार क्या होता है कि लालच और ग्रीड से हम बहुत ज्यादा रिस्क ले लेते हैं और उसको जुडिशियसली इन्वेस्ट नहीं करते। तो मुझे लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स आर बेटर एजुकेटेड नाउ एंड डेफिनेटली दे विल कंटिन्यू टू प्ले इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल इन द मार्केट। और उनको कॉशियस रहना जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए, यह एक बहुत गलती होती है। रिटेल इन्वेस्टर्स कैन डू वेरी वेल इन द मार्केट यदि वो थोड़ा समय लगाएं, थोड़ी स्टडी करें और अपने जैसे कहते हैं ग्रीड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, तो दे कैन डू वेरी वेल इन द मार्केट। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर एक नजर डाल लेते पहले। एशियाई बाजारों में आज गिरावट का रुख था। आशा से कमजोर चीन के फैक्ट्री गतिविधि सूचक और चीन द्वारा इंटरनेट कंपनियों पर नियंत्रण कराने की चिंताओं के चलते निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। जापान का निकेई, चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी प्रत्येक 0.8% की गिरावट पर बंद हुए। हांगकांग के हैंगसेंग में 2% का नुकसान दर्ज हुआ और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.1% की गिरावट आई। इस बीच चीन में राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के आंकड़ों से पता लगा कि आधिकारिक मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स पीएमआई मार्च के 51.9 से कम होकर अप्रैल में 51.1 हो गया। इसके अलावा देश के वित्तीय नियामक ने 13 इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स को आदेश दिए हैं कि वे देश में जारी इस क्षेत्र पर एंटी ट्रस्ट नियंत्रण की मुहिम के तहत निर्देशों का पालन करें। इस कदम से देश के अंदर और बाहर निवेशकों में चिंता उत्पन्न हो गई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो प्रमुख सूचकांक तेजी पर थे। पहली तिमाही के लिए यूरो क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि के आंकड़े जारी होने से पहले मजबूत कॉर्पोरेट परिणामों से निवेशकों की धारणा को बल मिला। दिन के कारोबार में लंदन का फुटसी 0.3% बढ़ गया। फ्रांस के कैक में मामूली वृद्धि थी और जर्मनी का डैक्स 0.5% की बढ़त पर था। Moving on to the U.S. Market, on Wall Street, the S&P 500 closed at a record high yesterday, fueled by gains in Facebook following its strong earnings report, while investors awaited upcoming results from Amazon. Facebook surged to an intraday all-time high after beating market expectations for quarterly revenue and profit late Wednesday, helped by a surge in digital ad spending during the pandemic and higher ad prices. Apple was nearly unchanged after posting sales and profit late on Wednesday, ahead of Wall Street's estimates on strong iPhone and Mac sales. Of the 265 companies in the S&P 500 that have reported so far, 87% have topped analyst earnings estimates, with Refinitiv IBES data now predicting a 45% jump in profit growth. U.S. economic growth stood at 6.4% annualized rate last quarter, the government said in its advance estimate for the first 3 months of the year. It was the biggest first quarter increase in growth since 1984. Also, a labor market report showed 553,000 people filed for unemployment benefits last week. So the Dow Jones Industrial Average climbed to 40 points, 0.7% to end at 34,060. The S&P 500 rose 28 points, 0.7% to close at 4,210. And the Nasdaq Composite added 32 points to 14,083. Puneet, clearly these companies which are highly efficient in using their labor and ensuring they get the most out of them, they have posted strong earning results, and it's also weighted from Amazon as an e-commerce firm. How do you look at it from the macroeconomic perspective of the U.S. economy, and what does this mean for emerging markets when it comes to FII, FPI flow?
So Arjun, like you said, that these companies now play a very important role in the U.S. economy and the global economy. And U.S. came out with this GDP numbers last week, and the growth was 6.4% for a fourth quarter. That is the March quarter. I think that is very impressive for an economy which is $18 trillion economy and growing at 6%. If they do and if they maintain that kind of pace, I think it will be a huge value creator not only for USA but for the world. And of course, these companies are the tech companies are not only U.S. Companies in a sense. They play a role in driving businesses across the world, and their growth will contribute to growth in emerging markets also, in other economies also. As far as I think SIIs are concerned, SIIs have made huge money by investing in the U.S. markets and across the global markets. So my own sense is, and if you look at the monetary policy, so there is no contraction of money supply, at least in the foreseeable future. So SIIs are going to be sitting on surplus cash for quite some time. And I think they will need to, and fixed income markets are not giving much returns in terms of bond yields. So I think SIIs have very little option but to go to equity markets. And I think their emerging markets like India can offer a very attractive proposition to them. So my own, I would say to sum it up, I would say that SIIs will continue to be investors in India, at least in the next foreseeable, I would say, couple of quarters. आइए लौटते हैं भारतीय परिवेश में। वित्त मंत्रालय ने पूंजीगत परियोजनाओं पर व्यय के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त 50 वर्ष का ऋण के रूप में 15,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने का फैसला किया है। व्यय विभाग ने वर्ष 2021-22 के लिए राज्यों को पूंजीगत व्यय में वित्तीय सहयोग योजना के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पूंजीगत व्यय से रोजगार के अवसर सृजित होते हैं, विशेषकर निर्धन और अकुशल वर्ग के श्रमिकों के लिए। इससे अर्थव्यवस्था की उत्पादकता क्षमता बढ़ने के साथ आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर सुनिश्चित होती है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि केंद्र की प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के बावजूद पिछले वर्ष राज्यों के लिए पूंजीगत व्यय में विशेष सहयोग की योजना शुरू करने का फैसला किया गया था। क्या कहेंगे आप पुनीत, ये आपको क्या लगता है ये प्रोजेक्ट किन किन सेक्टर्स में क्रियान्वित किए जाएंगे, किस तरह से फायदा होगा पूरी स्टेट्स को? देखिए, ज्यादातर ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं और लोकल एरिया के डेवलपमेंट के लिए रहते हैं, तो इसका असर काफी अच्छा रहता है क्योंकि ये सपोर्ट भी करते हैं लोकल कम्युनिटी को और एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं कम्युनिटी को। और देखिए, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है। यदि 15,000 करोड़ रुपए सरकार इन्वेस्ट करती है अलग स्टेट गवर्नमेंट, तो उसका 3 से 4 गुना हम समझते हैं कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। मुझे लगता है ये पब्लिक स्पेंडिंग विल स्पर फर्दर इन्वेस्टमेंट्स इन लोकल एरियाज और ज्यादातर ये छोटे शहरों छोटे गांवों में ये इन्वेस्टमेंट्स होती है। Well, let's have a look at the oil market. Now, global crude oil prices slipped today, taking a breather after touching their highest in 6 weeks as concerns of wider lockdowns in India and Brazil to curb the COVID-19 pandemic offset a bullish outlook on summer fuel demand and economic recovery. So, Brent crude oil futures fell 31 cents to $68.25 a barrel. U.S. crude futures for June slipped 42 cents to trade at $64.59 a barrel. Puneet, very briefly, there have been brokerage reports about the pent-up demand for travel, which will actually lead to a rise in prices, especially what we are seeing in the futures market. Why is that a mismatch between supply and demand right now? So clearly, OPEC Plus has curbed supply significantly in the last many months, and they have of course promised to increase production going forward. So from the month of May, we should see more oil coming onto the market, and prices are kind of manipulated right now. So my own sense is that only in 5-6 months we'll see some kind of return to normalcy as far as demand and supply is concerned. चलते चलते श्रोताओं को बता दें कि सोने के वैश्विक मूल्यों में गिरावट के अनुरूप दिल्ली सराफा बाजार में सोना 191 रुपए कम होकर 46,283 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी में 1,062 रुपए की भारी गिरावट आई और ये 67,795 रुपए प्रति किलो हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना मंदी के साथ $1,769 प्रति आउंस पर था और चांदी $25.92 प्रति आउंस पर स्थिर थी। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत, आप शामिल हुए इसके लिए। धन्यवाद सर।
And before we close, a reminder of the headlines. Core sector industrial output grows 6.8% in March. At the stock market, Sensex slumps 984 points. Nifty plunges 264 points. Rupee drops 2 paise against the US dollar. And Finance Ministry to provide an additional amount of up to 15,000 crore rupees to states as interest-free 50-year loan for spending on capital projects. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra. Market Mantra.